we all look forward to, like where we can. Hello, my beautiful ladies. So this is Pankhuri from. Hello, my beautiful ladies. So this is Saloni from Team Pankhuri, and I hope you all are doing absolutely great. And I hope that you all have missed a little. So before starting, just a sec. Okay. So yes, I hope that you all have missed us a little. And as you all know, that today we are going to do a very fun makeup that is on no makeup look. And I hope that everybody is excited today. So if you all are, can you all let us know in the chat box? क्या सभी आज के सेशन के लिए एक्साइटेड हैं बिकॉज आई थिंक ये काफी ट्रेंडी मेकअप है एंड आजकल काफी चल रहा है दिस नो मेकअप लुक एंड एज यू ऑल कैन सी दिस इज जैसलीन आवर ट्रेनर शी Hey विल बी द guys, वन how are you? she'll be the Yeah. one to teach us all about it. So, Jasleen? Hi guys, how are you? Hope you all are doing fine. So today we're going to be learning something very exciting, very easy, like a no makeup look, which we all, end up, wanted to do this. Like it's a go-to look. आप कहीं भी जा रहे हैं, party, lunches, even to the malls, even for dinners, even if for cocktail parties, you can always do this makeup and it'll rock, and it just completes the whole look. So I'm going to teach you very easy hacks, and yet आपको इसके लिए eyeshadow palette की भी जरूरत नहीं है. So I'm going to teach you, so once we start with it, I'll tell you how you have to go about it. Yes, guys, we will start the session exactly after 4 minutes because we told you that we'll be starting at 3:30. So we will start it exactly at 3:30. But before that, I just want to know that how excited everybody is here. So let me know. Sub excited. Oh my God, I can see so many messages कि यहाँ पे कितने सारे लोग excited हैं. And don't worry, we will cover everything in English and in Hindi, both the languages. So nobody has any issue with the language. Okay. आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में सारी चीजें एक्सप्लेन की जाएंगी तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है कि अरे सब इंग्लिश में हो रहा है या फिर सिर्फ हिंदी में हो रहा है ऐसी कोई चीज नहीं होगी ओके So yes, as you know, we'll be starting just in 2-3 minutes. So before starting the session, there's just few things I want to tell you all about, and then we basically will start with the session. Okay? तो सेशन स्टार्ट होने से पहले कुछ बेसिक चीजें हैं जो मैं आपको बता देना चाहती हूँ एंड देन उसके बाद हम अपना सेशन स्टार्ट करेंगे ओके So the very first thing is that as I just told you that we are going to have the session in both Hindi and English. हम पूरा ही सेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में लेंगे ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो लैंग्वेज को लेकर के The second thing that is there is that if you have any question or queries regarding the session, then you can always let us know in the chat box and I will ask all those questions and queries to Jasleen and she'll be the one to answer all of it. Okay? आपको कोई भी क्वेश्चन और क्वेरी हो तो आप वो सारी की सारी क्वेश्चन क्वेरीज चैट बॉक्स में लिख सकती हैं एंड मैं वो सारी क्वेश्चंस एंड क्वेरीज जासलीन से पूछूंगी एंड हम ट्राई करेंगे आपके मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन एंड क्वेरीज को आंसर करने का एंड इफ देयर बी एनी ऑफ द क्वेश्चन एंड क्वेरीज लेफ्ट then please don't worry. You can always ask them on the app and we will answer them there. Okay? अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन और क्वेरी बच जाती है तो आप पूछ सकते हैं हमारे जो पंखुरी ऐप है उस पे एंड आपको वहां पे सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे आफ्टर दैट once the session will be done, you will be able to watch the recordings on YouTube and we will try to post it on the app also. So you can check it there too and it will always be available on our YouTube channel that is AskPankhuri. So आपके जो भी क्वेश्चन जो भी ये सेशन होगा उसकी पूरा का पूरा सेशन रिकॉर्डेड सेशन भी यहाँ पे अपलोडेड रहेगा पंखुरी ऐप के ऊपर भी एंड जो हमारा YouTube चैनल है आस्क पंखुरी उसके ऊपर भी तो आप जब चाहें एंड जितनी बार चाहें उसको देख सकते हैं Also, all the products that Jasleen will be using, we have already uploaded them on the app. So you can just have a link. You can just check them out there also. And I think we have uploaded them in the, and yes, so yes, if you want to buy any of the products, they'll be uploaded on the app. You can check them there too. Okay, सारे के सारे products जो हैं वो भी app पे upload हो गए हैं, तो आप वहाँ से भी check कर सकते हैं. And the session is going to be live on YouTube. There is no Zoom link for it. Okay, जो पूरा का पूरा session है वो YouTube पे live होगा. कोई भी Zoom link available नहीं है इसके लिए. Okay.
and all the products are also listed down in the description box. So if you want to buy any of the products, you can just go to the description box, click on the link you want to buy, and you can buy the product. Okay, जो भी products हैं वो भी सारे products हमारे description box में link down है, तो आप वहां पे जाकर भी उनको products को buy कर सकते हैं. Okay, so yes, it's 3:30 and I think we can start with the session. Over to you, Jaslene. Okay. So hi guys, I just introduced myself. I'm Makeup by Jaslyn. You guys can follow me on my page, which is Makeup by Jaslyn. It's JAASLEN. And so today's makeup look is something very, very interesting and something which we all look forward to, like where we can just, get a flawless base, a radiant glass looking base. And uske saath hum normal smoky eyes karenge. So a lot of times, people have this myth in the mind that, smoky eyes will just make me look like a raccoon, I'll look like a panda eyes and my whole eye will turn into black and, it will just be a disaster. But actually, no, smoky eyes also, there are a lot of variations in smoky eyes. So we're going to do something which is very everyday look, which is something you can actually take it for dinners and parties. Like I said, even for lunches, even for the day look, you can carry this look really well. So उसके लिए हमें और बहुत minimum products की जरूरत पड़ेगी so that it's easier for you also and it's more budget friendly. So just let's get started with all this and hope you enjoy the session. So now I'm going to be telling you the products simultaneously and ताकि आपको पता चलता रहे कि मैं क्या क्या use कर रही हूँ. Okay, so and then of course the video is going to be on there uploaded on YouTube, so you can always go and check out the video in case you get stuck somewhere. All right, so now my face is properly cleansed, toned and moisturized. So मैंने cleansing, toning, moisturizing पूरा कर लिया है अपने face पे, which is CTM. And after cleansing, toning and moisturizing, toner लगाना बहुत जरूरी है to minimize your pores. हमारे यहाँ बहुत pores होते हैं यहाँ पे और ये T-nose area पे, T-zone पे, तो वहाँ पे हमें उसको बंद करने के लिए toner लगाना बहुत जरूरी है. So after you put the toner, I have put a moisturizer on top of it to put a shield. मतलब मैंने उसको टोनर को लॉक कर दिया है. आई हैव एक्चुअली डन अ शील्ड. टोनर बेसिकली इज अ प्रोटेक्टिव लेयर टू योर पोर्स, ताकि मेकअप अंदर तक ना जाए आपके पोर्स में और ब्रेकआउट्स ना हो, एंड प्लस आपके पोर्स को मिनिमाइज करे. और उसके ऊपर आई पुट अ मॉइस्चराइजर. ओके, एंड आफ्टर दिस आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद अनदर मॉइस्चराइजर व्हिच यू ऑल शुड बाय. दिस इज अवेलेबल एट नायका. दिस इज कॉल्ड एम्ब्रोलिसे. ठीक है, ये आपको नायका पे मिल जाएगा. एंड दिस वर्क्स एज अ प्राइमर ऑल्सो. तो ये सिर्फ एक मॉइस्चराइजर नहीं है, जबकि दिस वर्क्स एज अ प्राइमर एज वेल. तो आपको अलग से प्राइमर लेने की जरूरत नहीं है अगर आपको नहीं लेना तो, बिकॉज दिस इज अ मल्टी फंक्शनल क्रीम एज वेल एज अ प्राइमर. सो आई एम जस्ट गोइंग टू बी पुटिंग दिस ऑन द एंटायर फेस एंड आप इसको अपवर्ड डायरेक्शन में लेके जाएंगे लाइक दिस. मसाज हमेशा हमारी upward direction में होगी guys. Like you always take it like this so that आपका face droop ना हो. Never massage it नीचे की तरफ. आपको हमेशा अपना मसाज ऊपर की तरफ करना है like this. Okay, so that your face remains like young. It doesn't sag, it doesn't droop, because हमारे face पे भी बहुत muscles होती है और muscles की memory होती है. तो हम उसको जिस डायरेक्शन में we keep massaging, they go and settle in that same direction. Okay, so you will always massage it like this and you bring it down like this. So इससे आपका क्या है, extra toxins जो हैं और आपकी ड्रेनेज, lymphatic ड्रेनेज भी खुलती है, एक्स्ट्रा टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं, फेस पे ग्लो आता है, and it keeps your face more uplifted, not droopy and sad. Okay, so you gonna do this kind of trick. और neck का हमेशा आप नीचे की तरफ ऐसे मसाज करेंगे. Okay, so after your moisturizer is nicely set into your into your face, into your face. So now we are all the time on the screen, so screen ही निकलता है मुंह से. Okay, so once you've done this, see my face looks very, very hydrated, very well hydrated. Okay, after doing this, I'm going to use my spray which is there. Just a second. So yes guys, अभी तक हम लोगों ने किया है अपना CTM प्रोसेस. CTM प्रोसेस का मतलब है हम लोगों ने किया है क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग. जो यहाँ पे क्लेंजिंग हुआ यानी कि आप फेस वॉश करोगे, टोनर यानी कि आप एक टोनर यूज करेंगे, एंड मॉइस्चराइजर
जो मॉइस्चराइजर यहाँ पे जैस्लीन ने यूज किया है वो है एम्ब्रोलिसिस। एम्ब्रोलिसिस एक ऐसा मॉइस्चराइजर है जो आपका एज अ मॉइस्चराइजर भी काम करेगा एंड प्लस एज अ प्राइमर भी काम करेगा। तो आपको एक एक्स्ट्रा प्राइमर और एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट आप हटा सकते हो इसके हेल्प से। Okay. After doing this, then I'm just going to use this primer water, which is a setting, which is a fixing and a setting spray. This is by Smashbox. ये क्या करता है? After moisturizer लगाने के बाद अगर आप ये लगाती हैं तो this basically gives more hydration to your face. It doesn't let your face dry out. It doesn't let your makeup flake out or get patchy. So ये बहुत अच्छा well hydration देता है to your makeup, जिससे your makeup doesn't budge, doesn't become patchy. So I'm just going to spray this on my face. I'll wait for like few seconds for it to dry. Okay, now my face is very well hydrated, right? For my base to be started. तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे स्मैश बॉक्स का प्राइम वाटर जो होता है वो यूज किया है। उसको हम लोगों ने इसलिए यूज किया है ताकि हमारा जो स्किन है वो काफी हाइड्रेटेड रहे और हम लोग इसके ऊपर फर्दर अपना मेकअप स्टार्ट कर सके। Okay. Now after doing this, I'm going to be using a pore primer, जिससे मेरे ये pores थोड़े से blur हो जाए. Obviously pores cannot be vanished, पर ये आपको blur कर देंगे आपके pores को, ताकि आपके फाउंडेशन की ऊपर से pores दिखे ना. And because that looks really bad, तो आपके pores generally इधर इधर होते हैं. So I'm using this pore professional by Benefit. It is a blotting stick, or also it works in minimizing your pores. तो ये जैसे स्वेट के लिए भी काम करता है। अगर आपका कहीं बहुत ज्यादा ऑयल आ रहा है या स्वेट आ रहा है तो उसको ये मैटिफाई कर देता है, उसको मैटिफाई करता है, मतलब मैट कर देता है, शाइन कम करता है, शाइन कंट्रोल करता है, एंड प्लस आपके जो ये एक्स्ट्रा पोर्स हैं उन पे वर्क करता है। ओके, आपके पोर्स जो है उसको बिल्कुल ही ब्लर कर देता है ताकि आपके मेकअप पे पोर्स ना दिखे। So the next that we have used here is called a pore minimizer. It is by Smashbox and No, it no, is this called is by as, Benefit. It's by sorry, Benefit. it is by Benefit and it is also called as a blotting stick. It can also be used if you want, if you feel like that some area which gets very sweaty. So it can also be used there to minimize the sweat. So Exactly. yes. Right. After using that, I'm using a corrector because हमें अपने skin को correct करना is very important. We have dark circles, we have pigmentation around the mouth, और हमारे यहाँ भी darkness होती है कभी कभी। हमारे acne marks है, blemishes marks है, छोटे छोटे तिल है, तो उनको कैसे cover up करना और कैसे एक even skin tone देना है. So for that we use a corrector. So I'm using a peach corrector, which is by Cover FX. आप कोई भी करेक्टर आपको अगर लेना है, आप LA गर्ल का पीच ले सकते हो, ऑरेंज ले सकते हो, आप किसी भी कंपनी का ब्रांड का अपने से 2 शेड डार्कर जो है कंसीलर ले लो. दैट वर्क्स एज अ करेक्टर. ओके, इट शुड बी अ टोन ऑफ पीच और अ ब्राउन, लाइक मड ब्राउन. ओके, और इट कुड बी दिस कलर, और इट कुड बी ऑरेंज ऑल्सो, टू करेक्ट योर टू डू योर करेक्शन जहां जहां आपकी पिगमेंटेशन है. अगर आप करेक्ट नहीं करेंगे तो व्हाट विल हैपन इज आफ्टर द फाउंडेशन योर मेकअप विल स्टार्ट लुकिंग ग्रे. So many times you've noticed why people start looking gray, you know, why their makeup becomes oxidized. It is because when they don't do the color correction. So color correction is so important. Even it's more important than your foundation and your concealer, because what happens is the pigment which is on the skin that comes over the foundation. It reflects over your foundation. So it oxidizes the whole foundation and turns your face gray. So correction is a must, is like a very, very important step, guys. Don't miss out on this. So I'm just correcting now my under eye and my pigmentation areas. So next हम करने जा रहे हैं कलर करेक्शन। कलर करेक्शन इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि हमारे फेस पे जो भी हम लोग अपने पूरे फेस को एक इवन टोन में ला सकें। एंड प्लस आपने देखा होगा कि कई सारे लोग जब मेकअप करते हैं उसके बाद उनका फेस जो होता है वो काफी ग्रेश सा लगने लगता है। वो इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने कलर करेक्शन प्रॉपरली नहीं किया होता है। इसलिए कलर करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो यहाँ पे जैस्लीन यूज कर रही है वो कलर एफेक्ट्स का पीच कलर करेक्टर है। अगर आप चाहें तो आप LA गर्ल का जो कलर करेक्टर है आप वो भी यूज कर सकते हैं। You can also use MAC का MAC Pro कंसीलर आता है, करेक्टर एंड कंसीलर, आप वो भी यूज कर सकते हैं. That is also very good. I will show you guys. एंड अगर आप चाहें तो आप जो कंसीलर आता है किसी भी ब्रांड का कंसीलर आप ले सकते हैं, 2 शेड डार्क, वो भी एज अ कलर करेक्टर काम करेगा.
You can also use this one, which is by MAC. Okay, this is a Pro MAC concealer. इसमें ये आप ये वाले shades use कर सकते हैं to do color correction, like you guys can see. Okay, yeah, now you can see. आप ये कोई भी shade use कर सकते हैं to you do the color correction. So this is by MAC and this is called the MAC Pro Conceal Palette, which is medium deep. Okay, this is a medium deep shade and this is by MAC. तो आप ये इसलिए अच्छा रहता है जैसे जिनको प्रोफेशनली या ब्राइड्स करनी होती है और उनको हर तरह के स्किन टोन पे वर्क करना होता है. सो फॉर देम इट इज वेरी गुड बिकॉज इट हैज 5 शेड्स इन इट. ओके, एंड इट कम्स आउट चीपर. एंड या तो एले गर्ल का ले लो वो भी काफी सस्ता है. इट्स वेरी वेरी इफेक्टिव, सो यू कैन यूज दैट. सो टेक समथिंग विच इज क्रीमी, जो अच्छे से ब्लेंड हो जाए. ओके, and now I'm using this beauty blender. Okay, this is by Beautylicious. Also you can take pack का which is PAC. नायका पे अवेलेबल है. आप PAC का ले सकते हो, Beautylicious का ले सकते हो, आप रियल टेक्निक का ले सकते हो. वो सारे आपको नायका पे मिल जाएंगे. I prefer this angular one because ये अंदर तक चले जाता है बहुत आसानी से और ये बेकिंग में भी हेल्प करता है. जब हम पाउडरिंग करते हैं एक्स्ट्रा तो उस पर बहुत हेल्प करते हैं. मैं पाउडर यहाँ लगा के इसको आराम से यूज कर पाती हूँ बिकॉज ऑफ द एंगुलर फ्लैट साइड. ओके, एंड नाउ आई एम यूजिंग लिटिल बिट ऑफ स्प्रे अगेन, क्योंकि मैं जब तक आपसे बात कर रही थी तो मेरा प्रोडक्ट ड्राई हो रहा था. आपको साथ साथ ही ब्लेंड करना है बिकॉज अभी तो क्लास चल रही है तो आई हैव टू एक्सप्लेन यू. पर आप जब भी प्रोडक्ट लगाओ उसको आप साथ साथ ब्लेंड करोगे. यू कैन पुट द स्प्रे ऑन द ब्यूटी ब्लेंडर ऑल्सो लाइक दिस. थोड़ा सा इस पे भी मार लो. ओके, तो नेक्स्ट हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने अपना कलर करेक्टर यूज किया. उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे एक ब्यूटी ब्लेंडर यूज किया है. ये जो ब्यूटी ब्लेंडर जैस्लीन यूज कर रही है वो है ब्यूटिलिशियस का. द ब्यूटी ब्लेंडर इज बाय ब्यूटिलिशियस एंड वी आर जस्ट डैबिंग द प्रोडक्ट इन. हम अपना पूरा प्रोडक्ट अच्छे से स्किन में आप इसको बस डैब कर रहे हैं. आप जस्ट डैबिंग इट लाइक दिस. आप इसको रब नहीं करेंगे, आप अपने स्किन पे इसको घसीटेंगे नहीं, इसको रब नहीं करेंगे. प्लीज बी जेंटल. इट्स योर ओन स्किन, योर ओन फेस. यू गॉट टू जस्ट डैब इट. आपको इसको जस्ट ऐसे डैब करना है गाइज. You don't have to do anything else. It's a very easy technique. It looks like you're giving a massage to your face. So please be gentle to your own skin and just मैं over the lid पे भी लगा रही हूँ क्योंकि हमारे lid पे भी होती है pigmentation. So we have to cover our lids as well. Okay. So yes, हम लोग अपने lids को भी cover कर रहे हैं because वहाँ पे भी pigmentation होता है. Also guys, I can see a lot of questions regarding the recordings and certificate. So please don't worry. When the session will end, I will tell you that how you can download your certificate. I mean, where you will find it and where you will find the recordings. And also all the queries that are coming here, that how we can choose the right shade for our foundation and for the color corrector. Don't worry. Once you will go to our app, you will be able to see a PDF there. In that PDF, we have mentioned it that how you're going to find your correct foundation shade and everything. Okay, you can just check it there. Yes, yeah. Jasleen. Also, when you have to find your foundation shade, you have to just do a patch over here. और एक patch यहाँ करते हैं और एक patch यहाँ करते हैं और हम उसको ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से डैप करते हैं. देखते हैं कि अगर वो हमारे स्किन में अच्छे से डिसॉल्व हो गया है, ब्लेंड हो गया है, एब्जॉर्ब हो गया है, then that's the real color, that's the real shade that you have to go for. If something which is looking over your skin, आपके स्किन पे अलग से चमक रहा है, बहुत व्हाइट हो रहा है, ब्लेंड नहीं हो रहा है, then that's not your shade. So always take one shade lighter than your skin tone or your shade. If you want to brighten up your face, then you can go one shade lighter. But if you want to keep your own skin tone, then अपना skin tone लीजिए. और अगर आपको कंसीलर लेना है तो आप वो एक या दो शेड लाइटर ले सकते हैं. बट फाउंडेशन कैन ओनली बी वन शेड लाइटर. अदरवाइज ज्यादा लाइट भी आपके स्किन पे टार्निश होने लगेगा, ऑक्सीडाइज होने लग जाएगा. सो ऑलवेज रिमेंबर दैट. ओके, एंड इवन द अंडरटोन्स मैटर अ लॉट. जैसे अगर आपकी येलो अंडरटोन है या पिंक अंडरटोन है तो आपको पिंक अंडरटोन का है तो आप ज्यादा पिंक नहीं लेंगे, पिंक अंडरटोन का फाउंडेशन नहीं लेंगे, आप न्यूट्रल अंडरटोन का फाउंडेशन लेंगे. बिकॉज क्या होगा, अगर आप पिंक, ऑलरेडी आपकी स्किन बहुत पिंक रहती है और अगर आप पिंक फाउंडेशन लोगे तो आपका फिर ओवरऑल फेस और ज्यादा पिंक लगेगा. ओके, एंड दैट विल मेक यू लुक लाइक यू हैव रोजेशिया. सो अगर आपका येलो अंडरटोन है तो आप येलो अंडरटोन में लेंगे या फिर आप न्यूट्रल और येलो अंडरटोन का मिक्स लेंगे, बीच का कलर, और यू कैन गो न्यूट्रल ऑल्सो.
because neutral will help in cutting the yellowness, okay, that paleness in your skin tone. So you have to choose it like this. Whenever you go for foundations, there's पे लिखा होता है W, उस पे लिखा होता है N. W means warm, उस पे cool लिखा होता है, C लिखा होता है, C means cool, N लिखा होता है, N means neutral. So you have to select the color according to your own undertone, okay? And you have to do a patch on your skin so that you know that which color you're picking up. Is it a right color for you or is it too light for you? And it should not be too dark also, obviously. Otherwise, you'll start looking tan, Okay, after that, I'm using this NARS का BB cream, okay? आप किसी भी फाउंडेशन यूज कर सकते हो, आप नार्स की फाउंडेशन यूज कर सकते हो, आप फॉरएवर 52 की ले सकते हो, वो जर्मन ब्रांड है, नाइका पे अवेलेबल है और बहुत सस्ता है एंड वेरी वेल ब्लेंडेबल, फुल कवरेज है उसकी. आप एस्टी लॉडर का ले सकते हो, डबल वेयर. You can buy LA Girl also, you can buy Sugar also. So these are good brands and reasonably priced. So this is from NARS and I'm taking a very small amount, guys. Okay, like maybe a little bit more because we're doing less is more. मैं ज्यादा नहीं लगा रही प्रोडक्ट. So yes guys, करेक्टर को कवर करूंगी, that's it. Yeah, Saloni, you can go ahead. Yeah. So जब भी आपको अपना फाउंडेशन चूज करना होगा तो आपको आपका फाउंडेशन या कंसीलर अपने अंडरटोन के अकॉर्डिंगली चूज करना होगा. जैसे अंडरटोन में इफ इन केस आप पिंक अंडरटोन में आते हैं तो प्लीज पिंक जो फाउंडेशंस आते हैं उनके लिए मत जाइएगा, अदरवाइज आपका फेस बहुत ज्यादा पिंक लगेगा. इंस्टेड आप एक न्यूट्रल अंडरटोन का जो फाउंडेशन होता है वो ले सकते हैं. सेम अगर आप वार्म अंडरटोन के हैं तब आप वार्म अंडरटोन का जो फाउंडेशन होता है वो आप ले सकते हैं. एंड आपको ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा फाउंडेशन वार्म है या कूल है या न्यूट्रल है? तो इनकी जो बॉटल्स होती हैं उनके ऊपर लिखा होता है WC या N. W यानी वार्म, C यानी कि कूल, N यानी कि न्यूट्रल. उसके बाद आपको आपका शेड जब चूज करना होगा तो आपका जो जॉ लाइन वाला एरिया होता है वहां पे आप फाउंडेशन अप्लाई करिए. उसके बाद उसको अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड इन करिए. अगर आप देखते हैं कि आपका प्रोडक्ट अच्छे से ब्लेंड हो गया है आपके फेस पे तो इसका मतलब है कि वही आपका शेड है. एंड इफ इन केस वो अलग से दिख रहा है, वाइट हो रहा है या ग्रेश सा हो रहा है, तो मतलब ये कि वो सही नहीं है, तो आप प्लीज दूसरा फाउंडेशन चेक करिए. फाउंडेशन जो होते हैं वो आपके स्किन टोन या उससे एक स्किन टोन लाइट हो सकते हैं. एंड जो कंसीलर्स होते हैं वो 1 से 2 स्किन टोन जो होता है आपका उससे लाइट हो सकते हैं. उससे ज्यादा मत जाइएगा, अदरवाइज वो बहुत अजीब सा लगेगा. Exactly. So I have put my BB cream or it is more like a moisturizer. It's just a little tint. This is not full coverage because हम लोग less is more रख रहे हैं, हम minimum to minimal base रख रहे हैं, तो इसलिए I've used a BB cream. आप BB cream यूज कर सकते हो, फाउंडेशन यूज कर सकते हो. दिस इज अ BB cream and a moisture tint, दोनों का मिक्स है. So I'm using a fair skin tone, which is I'm using Light Zero, which is by NARS, and this is a tinted moisturizer, guys. It looks like this, and the number is 0 light. Okay, so and this is a little on a warmer side, and this is not on a pink side. This is a neutral side because even my skin tone is little yellow and pink का mix. Okay, undertone is like that. कई जगह pink है, कई जगह ज़्यादा yellow है. So for that, I went for a neutral undertone foundation. Okay. Now after this, we'll be using a concealer. और मैंने ये कंसीलर जो लिया है ये है बोइंग कंसीलर बाय बेनिफिट. दिस इज अ केकलेस बोइंग कंसीलर बाय बेनिफिट. ये आपको नायका पे मिल जाएगा और ये भी नायका पे मिल जाएगा. दिस इज बाय मेकअप फॉरएवर HD कंसीलर. दोनों की कवरेज बहुत अच्छी है एंड दोनों का फॉर्मूला बहुत अच्छा है. दोनों बहुत क्रीमी है, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है. सो यू कैन बाय ईदर ऑफ देम एंड दिस बोथ आर अवेलेबल एट नायका. सो आई एम यूजिंग दिस बेनिफिट टुडे. मैंने आप देखना मैं कहाँ कहाँ लगा रही हूँ कंसीलर, क्योंकि कंसीलर लगाने के भी बहुत तरीके होते हैं. उससे भी आपका फेस का पूरा गेटअप चेंज हो जाता है. सम पीपल मेक योर फेस लुक वेरी मेच्योर एंड सैग्ड एंड ड्रूपी, एंड सम पीपल कैन मेक योर फेस लुक मच यंगर देन योर एज एंड कैन अपलिफ्ट योर फेस. ओके, तो उस पर बहुत डिपेंड करता है कि आप किस टेक्निक से अपना फाउंडेशन और बेस लगा रहे हैं. उस पर बहुत डिपेंड करता है कि यू कैन एक्चुअली मेक समवन लुक मच younger or someone look much more older than their age. Okay, so just keep a watch कि मैं कहाँ पे लगा रही हूँ. जैसे जैसे सलोनी एक्सप्लेन करेगी, पर आप यहाँ पे देखते रहना कि मैं कहाँ पे कंसीलर लगा रही हूँ. So next, after applying the BB cream, we are moving forward towards the concealer.
Now, the wherever you are going to apply the concealer, that is going to define your face the most. So if you want to get a very uplifted look, you can see how you're going to apply your concealer. You're not going to apply a lot of it, and whatever you're going to apply, it is always going to be in the upward direction, and this will give you a very lifted look on your face. आप जब भी कंसीलर अप्लाई करेंगे और आपको लिफ्टेड लुक चाहिए होगा, तो आपका कंसीलर जो वो है वो ऐसे ऊपर की डायरेक्शन में जाता हुआ लगना चाहिए, एंड तब आपको अपलिफ्टेड लुक मिलेगा आपके फेस में और एक यंग लुक मिलेगा. Yes, So now Jasmine. you guys have seen how I've done the mapping of the concealer on my face. And now I'm going to take this on a linear direction, like in an upward direction. So that मेरी eyes ये foxy लगे, like uplifted लगे, droopy ना लगे मेरी eyes, okay? So I'm going to make them look like foxy eyes, and this is the trending makeup. This is how we have to do the concealer nowadays, or even otherwise also. This trend has started coming now, but you know, we all should have been using this much before to give that uplifted look to our face. So it really depends आप कैसे concealer लगा रहे हैं और वो वहां पे ही फिर वो. So now you see this side and this side. This side looks much more uplifted than this side. So you have to put the concealer in that direction. So always goes in a upward linear direction, guys. और even the inner corners of the eyes अच्छे से लगाना है, नहीं तो क्या होता है आपके कुछ टाइम बाद नोटिस करें यहाँ लोगों के ब्लैक डार्क लगने लग जाता है from the inner corners. So inner corners also have to be covered really well. Okay. तो यस गाइस, आपको जो आपके इनर कॉर्नर्स होते हैं आईज के, उन पे भी अच्छे से वर्क करना पड़ता है. अदरवाइज आपने देखा होगा कि कई लोगों के इनर कॉर्नर्स काफी डार्क लगने लगते हैं थोड़ी देर के बाद. इसीलिए आपको इनर कॉर्नर्स को भी अच्छे से फिल इन करना है. एंड आप जब अपना प्रोडक्ट को ब्लेंड इन कर रहे होंगे कंसीलर को, तो भी आपको ब्लेंड इन जो करना है वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में ही करना है. ओके. एंड आप जैस्लीन को देख सकते हैं, वो डैबिंग मोशन यूज कर रही हैं, वो उसको मर्ज नहीं कर रही हैं, टैप कर रही हैं. Okay, I'm not like rubbing it. I'm not rubbing it off on my skin. I'm just dabbing it. Okay. Jaslyn, there were a few questions. Okay. Okay, so somebody is asking कि मैम मैं जब भी अपने फेस पे फाउंडेशन यूज करती हूँ तो वो मुझे एक बहुत ही ऑरेंज सा ब्लेंड देता है, जबकि मैं उससे बहुत अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ. What because could be the reason? you must be using an orange based foundation. आप अपना color सही use नहीं कर रहे. You should go for a neutral skin tone. Must be going for a warmer skin tone जिससे बहुत ज़्यादा वो orangey shade में होगा, more tan shade में होगा foundation, जिस वजह से आपका face orangey लगता होगा. और it can be another thing that you are using a orange corrector, ठीक है, and इसमें आपका foundation का जो वो है coverage है वो light है, जो वो कवर नहीं कर पा रहा, तो वो नीचे का जो ऑरेंज कलर है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है आपके ओवर द फाउंडेशन. दैट कुड बी द रीजन, दैट इज व्हाई इट्स लुकिंग मोर ऑरेंजी. सो यू हैव टू चेक योर फाउंडेशन. बेसिकली आपको फाउंडेशन ज्यादा फुल कवरेज का लेना चाहिए, चाहे आप एले गर्ल का लो, चाहे आप चाहे शुगर का लो, चाहे आप फॉरएवर 52 का लो, पर आप स्किन टोन न्यूट्रल लो और अपना करेक्टर जो है वो ज्यादा ऑरेंज मत लगाओ, उसमें थोड़ा सा पीच मिक्स कर लो या ब्राउन मिक्स कर लो. लाइक सपोज इफ यू यूजिंग दिस वन, ये ऑरेंज है, अगर मैं ऑरेंज भी लगा रही तो मुझे अपना जो ऊपर कंसीलर है वो अच्छे से लगाना है और लाइट शेड का लगाना है और एक शेड लाइट, और उसकी फुल कवरेज होनी चाहिए ताकि ये ऑरेंज को कवर कर सके. ठीक है. या आप ये इसके साथ आप मिक्स कर लो, या आप इसको ये ऑरेंज जो है सपोज उसके साथ आप ये थोड़ा पीच मिक्स कर लो, यू नो, ताकि वो इतना ऑरेंज ना लगे. सपोज दिस इज एन ऑरेंज, सी दिस इज अ वेरी डीप ऑरेंज. ओके. कई बार ये रिफ्लेक्ट करता है कलर, इसलिए आई प्रेफर अ पीच और अ ब्राउन और अ कैरेमल शेड रादर. और अब मैं इसको टोन डाउन कर रही हूँ. नाउ यू सी you can put this instead of putting a direct orange. Now see there is a lot of difference. वो कितना ऑरेंज है और ये कितना वो है. और इसमें अगर मैं थोड़ा सा कैरेमल मिला दूं ये वाला, और सी bit of brown. अब इसको कट करना ज्यादा आसान है देन विद एनी फाउंडेशन देन दिस कलर. ओके. और यू कैन ऑल्सो यूज अ स्ट्रेट ब्राउन विच इज दिस वन. ठीक है. इस तरह के कलर्स आप यूज कर सकते हैं करेक्टर पे, बट मेक श्योर कि आप अपना फाउंडेशन की कवरेज अच्छी है, बहुत मिनिमम कवरेज नहीं है. अब सपोज मैंने यहाँ पे ऑरेंज किया होता और अगर मैं अपनी बीबी क्रीम लगा लेती
तो भी पूरी तरह कवर शायद नहीं होता, बिकॉज मेरी बीबी क्रीम में इतनी कवरेज नहीं है। तो आप अगर ऑरेंज लगा रहे हैं तो मेक श्योर आपकी फाउंडेशन की कवरेज अच्छी है, आपका कंसीलर की कवरेज अच्छी है, और आप उसको अच्छे से ब्लेंड कर रहे हो। ओके, आई होप दैट सॉल्व्स द पर्पस। Yes, I think that is. So somebody, a lot of questions are there that if somebody has an oily skin, then what type of foundation or which foundation they should go for? Then you should go for more of a like a water based foundation, or you can go for a gel based foundation, like which is what like instead of going for a more cream based. Generally आप क्या होता है कि आप फाउंडेशन तो कोई भी यूज कर सकते हैं, पर आप जो नीचे अपने बेस में इतने ऑयल्स मत लगाओ, नॉर्मल क्रीम लगाओ। दिस क्रीम इज वेरी गुड, लाइक आई सजेस्टेड। ये बिल्कुल ब्रेकआउट नहीं करती है, हर स्किन टोन में जाती है, चाहे ऑयली हो या कॉम्बिनेशन हो। और आप उसको बहुत ज्यादा प्रोडक्ट मत लगाओ। यू जस्ट सॉ आई पुट ओनली पी अमाउंट। मैंने थोड़ा सा एक पी अमाउंट लिया था, और मैक्स यू कैन टेक 2 पी अमाउंट, लाइक 2 पफ्स, एंड यू कैन कवर द फेस विद दैट। आप फाउंडेशन कम रखो, कंसीलर अच्छे से लगाओ। अगर आपके प्रॉब्लम एरियाज है भी तो पुट अ लेस फाउंडेशन, बट कंसीलर अच्छे से लगाओ जहां जहां मैंने लगाया। तो योर फेस विल नॉट ब्रेक आउट, एंड ऑयली स्किन पे इट वर्क्स रियली वेल। एंड कीप योर फेस मोर मैट। पाउडर एप्लीकेशन अच्छे से करनी पड़ेगी, so that your face doesn't bleed, your makeup doesn't bleed and doesn't get oily. Okay, so now we'll move on to the next step, and we'll take the questions also simultaneously. After I have done this concealer properly, okay, I'm giving a no makeup look, so I don't want to make it more cakey. I want to keep it very less like that. After using that, I'm using a loose powder, which is by Laura Mercier. I'm not using a compact, guys. ये compact है. This is a pressed powder, जो आप सबके पास generally होता है. This is a pressed powder. This also makes another layer, okay? Because this is a dry foundation. In a way, it's a dry foundation. ये एक अलग से layer create करता है. And आज हमारा no makeup look है. So I'm not using a compact. I'm just using a loose powder to pack my cream products. ताकि मेरे मेकअप ब्लीड ना करे। और वैसे भी अभी समर्स है, बहुत ह्यूमिड वेदर है हमारा, तो वी हैव टू पैक इट नाइसली विद अ लूज पाउडर। सो आप ऐसे कलर का पाउडर ले लो। आप लैक्मे का ले सकते हो, मेबेलिन का ले सकते हो, शुगर का ले सकते हो, फॉरएवर 52 का ले सकते हो। दे ऑल आर अवेलेबल एट नाइका। आप हुडा ब्यूटी का ले सकते हो, एंड दिस इज बाय लॉरा मर्सियर। ओके, एंड आई एम जस्ट गोइंग टू पुट इट अंडर माय आई नाइसली। एंड यही मैंने जो इस पे लगाया, वही मेरे ब्रश पे था प्रोडक्ट, और वही मैं पूरे फेस पे आई एम गोइंग टू डू इट ऑन वन साइड ऑफ द फेस। बिकॉज रिमेंबर, वी आर नॉट मेकिंग इट केकी, वी आर डूइंग अ मेकअप विच इज वेरी वेरी एवरीडे लुक, जो आप ऑफिस में करके जा सकते हो। इट डजंट लुक टू मच, वेरी गो टू मेकअप। सो नेक्स्ट हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया है लूज पाउडर। हम लोगों ने कॉम्पैक्ट नहीं, वी हैवंट यूज्ड द कॉम्पैक्ट, वी हैव यूज्ड लूज पाउडर हियर। The reason why we haven't used a compact is because that will also create a kind of layer over your face, and since we are doing a no makeup look, we do not want to have a lot of layers on our face, otherwise it will start looking very cakey. Hence we are not using a compact, rather we are using loose powder here. हम अभी लूज पाउडर यूज कर रहे हैं, कॉम्पैक्ट नहीं। यस जासमीन। सी गाइस, आफ्टर आप ज्यादा भी अगर अपने अंडर आई के नीचे पाउडर लगाएंगे, क्या होगा कि हमारे अंडर आई के नीचे फाइन लाइंस होती हैं, तो उससे क्या होगा कि हमारे अंडर आई क्रीज करने लग जाती है। दैट्स व्हाई वो फाइन लाइंस और विजिबल हो जाती है। दैट इज बिकॉज यू यूजिंग एक्सेस ऑफ पाउडर अंडर योर आईज। सो यू जस्ट नॉट गोना डू एक्सेस पाउडर अंडर द आई। जितना रिक्वायर्ड है उतना करो। और जो एरिया पे आपको लगता है, जैसे दिस एरिया आपका ज्यादा ब्लीड करता है, स्वेट आता है इस जगह पे, तो उस जगह पे आप अच्छे से थोड़ा पाउडर कर सकते हो विद द लूज पाउडर। ओके, so wherever you feel that you sweat but a under lot the on your eye face, you will keep powder less. Under the eye you'll just do this much powder. आप इससे ज्यादा नहीं करोगे ताकि आपकी आईज क्रीज ना करे। लॉट ऑफ टाइम्स पीपल से ना हमारे आईज के नीचे बहुत लाइंस दिखने लग जाती है। इट इज बिकॉज वी आर यूजिंग एक्सेस पाउडर। जब वो ड्राई हो जाएगा तो ऑब्वियसली लाइंस और विजिबल हो जाएंगी। ड्राई होगा, ड्राइनेस में क्या होगा, लाइंस के अंदर पाउडर बैठने लग जाएगा, तो ऑटोमेटिकली लाइंस और विजिबल और क्रीजेस और विजिबल हो जाएंगे। So that is the problem. So keep your powder limited under the eye.
ओनली जितना रिक्वायर्ड है, ज्यादा पाउडरिंग मत कीजिए, अंडर आई के नीचे वो ड्राई होगा और लाइंस दिखने लगेंगी. सो कीप इट मिनिमल. ओके, So like yes, this. guys, whenever you're working, if you have lot of sweat on your skin when you do the makeup and you get lot of sweat on your skin, what you're going to do is you are going to do the baking, or like you are going to use the loose powder, and wherever you feel like you sweat a lot, use little more amount of loose powder there. And you can also do little bit of baking at that place. Baking is like just putting loose powder, leaving it for like 2-3 seconds, and then removing it. But remember, do not use lot of loose powder under your eyes, because there are fine lines, and after using lot of loose powder you might end up getting fine lines there, and more of the lines will be visible. So don't use lot of loose powder under your eyes, but you can use it around your face and everywhere wherever you feel there's lot of sweat coming. Yes, Jasmine. Okay, guys. Next, coming to the next step, which is contouring. It's my favorite step. So I'm using this Hoola bronzer by Benefit. इसके साथ ये brush आता है. This is by Benefit. This is also available at Nykaa. So you guys will see how I'm making my contouring. That is, contouring इसलिए करते हैं ताकि हम अपने face के features को और enhance कर सके और अपने face को uplift कर सके. Okay. So I'm using it like this. I'm making a C, then another C. Okay. So I'm making a E, you can say, like this, this, and this. Okay, like this. And इसको अब मैं upward direction में towards my hairline लेके जाऊंगी, above my ears के ऊपर. Okay, like this. So next हम लोगों ने लूज पाउडर के बाद अब हम कर रहे हैं कॉन्टोरिंग. कॉन्टोरिंग के लिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है कि हम लोगों ने, दिस इज बाय हूला, राइट जैस्लीन? हूला बाय बेनिफिट. ओके ओके. तो ये जो अभी जैस्लीन यूज कर रही हैं, ये बेनिफिट का हूला कॉन्टोर है. एंड इसमें आपको क्या करना है कि हम अपने फोरहेड से लेकर के पूरे चीक बोन्स तक हम लोग अपना अपने जॉ लाइन, अपने jaw चीक line बोन्स और अपने टेम्पल एरिया को हम कवर कर रहे हैं. सिमिलरली आई एम गोइंग टू डू इट ऑन दिस एरिया आल्सो, लाइक अ सी. ओके, आप इसको यहाँ तक रखिए, यहाँ तक मत लाइए, नहीं तो ये सारा ब्राउन हो जाएगा. ओनली कीप इट टिल हियर. ओके, लाइक दिस, and take it towards your hairline. And everybody who had this question, that I have a very broad forehead, so you can, I think you can do the same process. I'll tell you for that also. Let's go step by step, guys. So we are doing for the cheekbones and this area. यहाँ पे भी मैंने वापस से वही बनाया, सी बनाया. So for the jawline, I'm also doing the same thing. I'm bringing it down so I can cover my double chin. अगर आपकी double chin है, you can always cover it like this. Okay. So yes, अगर आपके, if you have double chin, you can always use this contour and you can move in the downward direction. And so you see there is no lines here. It ऐसे line नहीं होनी चाहिए. It should only create a shadow. Okay, there shouldn't be any lines, guys. It should only be a shadow. Okay, and for the forehead, जिनके forehead बड़े हैं या छोटे हैं, उनको अपने forehead पे भी यहाँ पे you have to put the product like this. Okay, and you'll take it little on your hairline like this, so that your forehead also looks proportionate in the pictures. Okay. Okay, Jasleen, there were a few questions. Yeah, let me just complete this once, then I'll take up the questions. And this I'm doing on the lower lip, so your lips looks bigger. This is how you create an illusion to make your lips look bigger. On the cupid's bow, I'll put a little bit, and then on the bridge of my nose, आपको थोड़ा ये lines जो हैं उस पास में create करनी है with the brush, so your nose looks sharper. Okay, guys. So you have to, जिनके broad nose है उनको थोड़ा अंदर की तरफ create करनी है line, so your nose looks sharper, and that is that's called the bridge of the nose. So and ये आपका hook of the nose है, तो उस पे भी आपको ऐसे लगाना है ताकि आपका ये चीज लंबी ना लगे in the pictures. Okay, it looks proportionate and like this, and you will not bring it here. अब इसको बस ऐसे blend करेंगे.
So next, what we are doing is we are and then you're just taking it on the inner corners of the eye, not inner corners, upper crease में ऐसे ले जा रहे हैं, just to join it, okay, so that ये एक जैसा join लगे. Okay, like so this is how you do it. Yeah, now you can tell. Okay. So next what we have done is we have contoured our nose. So in order to contour our nose, what we have done is contour basically is like you're camouflaging your face. So what we have done, we have just drawn a single two different lines on the edges of our nose. Actually, not camouflaging. Camouflaging is your concealer, but this is like creating a 3D look. It's basically sculpting your face. Okay, we are basically sculpting our face. Okay. Yeah. Now, so what we have done on the bridge of a nose, we have just made two lines, and while creating those two lines, we have blended them in the downward direction to get a very chiseled nose. And also on the hook of your nose, you're also going to do the same process. And the line that you have created, you're going to merge it with the brows that you have above, so that it gets a very blended look on your face. Otherwise it will look very different on your face. Okay, it'll you'll have those strokes. You don't have to make your makeup look strokey. It has to look like you've done an airbrush look, very smooth, and just a shadow should be seen, nothing else. Just like the shadow create and that's it. Okay, now next time using a blush on, which is by the Balm, which is the Balm, and it's called Balm Springs. Okay, and this is by the brand The Balm, and this is available at Nykaa too. So यहाँ हमने contour line बनाई, इससे ऊपर हमारा blush आएगा, ठीक है? Contour से ऊपर blush आता है, and we'll smile and we'll take it from our apples of the cheeks. से हम start करेंगे like this. We'll take it like this. Next, we are using the blush here. Now for the blush, you can just smile a little, and you are going to start using your blush from the apple of your cheeks. Just start creating a line from above your contour that you have created and on your apple of your cheeks, and then just you are going to blend it towards your ear. Yeah, so this is your contour and this is your blush, okay? You can also do a little bit on the nose, center of the nose, to give it a sun-kissed look. Just blend this nicely. Okay, like this, you put your blush on. You put your blush on, then you're going to take a highlighter. This is by Anastasia by Beverly Hills. This is not available anymore. It was a limited edition. But you can take Forever 52 का एक highlighter palette आता है that I would like to show you guys. आप वो ले सकते हो. It's very, very reasonable, affordable one, and works really, really well. I don't have it right now, but you can buy it from Forever 52. Forever 52 का palette आता है, पूरा highlighter palette. उसमें 6 shades होते हैं, and it's very reasonable. It's for 2200 or 2000 का. And it works really well. उसके अंदर champagne color है, silver color है, pink color है, सारे color के highlighters है. So on highlighter, now I'm going to put it on the fleek. So this is my contour. This is my blush. There comes your highlighter. Okay. So like next this. हम लोग यहाँ पे use कर रहे हैं highlighter. So highlighter क्या होगा? आपका सबसे पहले आता है contour, उसके ऊपर आता है आपका blush, and blush के सबसे ऊपर आता है हमारा highlighter. So these are the 3 lines that you can create, like 3 lines basically. Yeah, these are the guidelines. This is like the mapping, and then the center of the nose, little bit. जिनके बहुत oily skin है, वो थोड़ा सा कम लगाएंगे highlighter. नहीं तो उनका फिर skin ज़्यादा oily लगेगा, दिखेगा, and makeup ज़्यादा वो bleed करेगा. Like ऐसे feeling आती है कि it's getting more oily because they sweat a lot. So people who sweat a lot can avoid doing too much highlighter. लगाइए, but कम on the cheek, then on the upper lip, so that your lips look bigger. Next जो हम लोग highlight कर रहे हैं, आपने देखा हम लोगों ने अपने blush के just ऊपर highlight किया, उसके बाद हम लोगों ने अपने हल्के से forehead को highlight किया है. I'll tell you just a second, Saloni. So basically, you will put your highlighter on the high areas of your
फेस। जहाँ ज्यादा लाइट पड़ती है वहां पे आप हाइलाइटर लगाएंगे, जहाँ पे डार्कनेस, जहाँ शैडो पड़ती है वहां कॉन्टूर करेंगे, और जहां जहां लाइट पड़ती है वहां पे आप हाइलाइटर लगाएंगे. It's as simple as that. Okay. And the areas obviously which I work, you can put it on your this also, your collarbones. Okay. You want to highlight, अगर आपने deep पहना है तो you can always put it on your collarbones as well. So these are the high areas of your face where you need to put the highlighter. Okay. And now we'll move on to the eyes. Our base is almost is kind of done. Then after doing the eyes, we'll do your lips also. Okay. So now for the eyes, I'm using this brow pencil, which is by Benefit, number 5, which is called the Goof Proof pencil by Benefit. And this is a brow pencil to bring a little shape to my brows and to fill the gaps. And this is by Benefit. Yes, Saloni, on to you. Yeah. So अभी हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने we have highlighted our face. So remember, whenever you're contouring, you're creating kind of shadows. So you're going to contour at the places where naturally shadows occur on your face. For highlighting, you're always going to highlight the high points of your face. By high points, we mean that when you go in the sun, you see that these parts of your face basically get the maximum light. So those are the areas where you are going to highlight. And now you can see we are doing our brows, and the brow pencil that Jasleen is using here is by Benefit. It is called as Goof Proof brow pencil, and it is in the shade number 05. No, this is 3, but you can use 5, 3 or 4. But don't go for blacks. Take either browns or always have to take a brown. So this is like a little lighter brown according to my hair color. You'll always select according to your hair color. But the safest ones are 3, 4 and 5. Okay. Now I've put two lines here, one line here, one line here. एंड मैं इसको बस अब जैसे जैसे ब्राउ लाइन जा रही है वैसे वैसे मैं इसको मूव कर रही हूँ, और यहाँ से मैं इसको नीचे लेके आ रही हूँ बिकॉज देयर इज अ आर्च हियर. ओके, सो आई एम क्रिएटिंग एन आर्च बिकॉज आई वांट टू, एंड आईब्रोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपके फेस को एकदम अपलिफ्ट कर सकती है और एकदम ड्रूपी बना सकती है. सो नाउ दिस साइड लुक्स मोर ड्रूपी and this side looks uplifted automatically because of the brows. How I'm creating, because I have created a proper arch and yet trying to keep it very natural. So I'm just filling it up with the same pencil. So अभी you can और मैं आगे से फिल नहीं कर रही, मैं आगे के 2-3 बाल छोड़ रही हूँ, उसको फिल नहीं कर रही. और मैं ये मस्कारा वॉन्ड है उसके पीछे ही दिया हुआ है पेंसिल के, एंड आई एम यूजिंग दिस एंगुलर पेंसिल विच इज इजी टू डू द स्ट्रोक्स. एंड इस मस्कारा वॉन्ड से मैं बस ये कलर डिफ्यूज कर रही हूँ इनटू माय eyebrows so that my brows look natural. और एक शेडिंग क्रिएट होती है. बेसिकली आपको शेडिंग क्रिएट करनी है. फ्रंट से लाइट होने चाहिए एंड बैक से डार्क. मतलब जैसे जैसे जाओगे तो डार्क होते जाएंगे. हाउ आर नेचुरल ब्राउज आर आल्सो लाइक दिस. फ्रंट से हमेशा लाइट होते हैं इफ यू नोटिस, एंड देन इट गोज डार्कर. ओके, द सेम वे you can remove a bit of extra if you feel like, but these days thicker brows are very in. Okay, similarly I'm going to draw the line. You guys see how it is very simple and very natural. I'm using, again I'm making 2 lines. So next you can see that we are doing the brows. So brows, for the brows, what we are doing is we basically are creating 2 lines here. We are outlining the natural brows, and when you will be outlining, you are also going to create an arc at the center of it, like where you find the where your brows start to curving. No, there you're going to create a simple arc. The reason why we are going to create an arc is so that we get a little uplifted look here. So in that way, you're just going to create little bit of arc, and then later on, you're just going to start fill it in. Next, when you will start filling in, you can fill it in, but do not start from the very starting. Just leave 2-3 hairs from the front. Yeah. 2-3 strands of hair from front, and then you can start filling in. Once you have filled in your brows, then what you can do is you can use a mascara wand that usually is given behind the brow pencil. Yes.
You can just use that, and you can just use that mascara wand to give a very natural effect and also to create kind of shadow in front of your brows, and it will give you a very natural look on and all. Okay, so this basically is how you create your lifted look of your brows and also a very natural look. Yeah, guys. So you guys can see. So this front is much lighter, and then it starts getting darker. So if you want to keep it little lesser thicker than this, then it is totally up to you. I like it this way. It's totally your choice. Because thicker brows are in these days, and it gives you a very younger look also. But please choose a right color, because ऐसा ना हो कि thick के चक्कर में आप black कर दो और वो फिर अलग ही it looks like shakal. So don't do that. So always go for a very subtle brown. And I'm just uplifting my brows with a spoolie. This is basically called a spoolie, okay, or a mascara wand, whatever you want to call it. But the actual word is spoolie. And we just the shaping of our brows and are filled in the. So yes, you can see that we have created a very natural looking brows here, and they don't look like shakas, right? Yeah, okay. So that's a very important thing to remember, because फिर क्या होगा, आपका सारा focus सिर्फ आपके brows पे जाएगा and nobody's going to see your face and your face will look so scary. So just don't make it look like that. Just try to keep it as natural as you can. Okay. After this, now we're going to go with the smoky eyes. How are we going to create the smoky eyes? It's very, very simple. First, take a kajal. Okay, I'm using this sugar ka kajal. Okay, which is available at Nykaa. I'm going to do a मैं अपनी जो upper line है, इसको water line को मैं पहले वो करूँगी. Fall off, day off. Okay, so abhi you can see हम लोग use करेंगे काजल, and we are using a black kajal by sugar. So what we are going to do, we are just going to create an outline on our upper waterline. Okay, हम अपनी upper waterline पे एक outline create करेंगे. Well, I'll just show you how you have to do it. Hold it like this, and you're gonna you're gonna line your upper waterline. वो इसलिए करते हैं so that ये जो gaps है आपकी lash line और जो अंदर white है वो दिखना नहीं चाहिए. That doesn't look good. The look doesn't look complete and it doesn't look cool. The eyes don't look cool and complete. For that, you have to, do this. So basically हम ये अपर अपनी eyelashes को इसलिए upper waterline को इसलिए हम लोग काजल यूज कर रहे हैं ताकि हमारी Jaslyn, your camera. Okay, it's fine now. So yeah, हम अपनी upper waterline को इसलिए outline कर रहे हैं ताकि हमारी जो lashes हैं and वो जो बीच में हल्का सा white portion होता है ना वो ना दिखे and हमें पूरा अच्छे से वो filled in दिखे. So you can see how Jaslyn is outlining her upper lashes. Upper waterline, okay. Yeah. मैं नीचे नहीं लगा रही. I'm just doing my upper waterline, guys. Okay, to give that cool look. Jaslyn, you're on mute. You're not audible. Yeah, I was actually asking why do my battery is dying? I don't know why. Yeah, okay. All right. Anyways, so this is how you do it. And after this, I'm just applying the same kajal on my यहाँ पे जैसे काजल लगाते हैं लाइनर लगाते हैं तो मैं काजल लगाऊंगी. मैं यहाँ से स्टार्ट नहीं कर रही. आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम हियर. So you can see right now we are just using a kajal and we are applying the kajal. Very simple look. Yeah, very simple. We're just going to put it like this. Okay. So we are just going to apply the kajal the same way we apply the liner. जैसे हम liner लगाते हैं same वैसे ही हम अभी काजल apply कर रहे हैं. Like this thick you can keep it. And we're going to blend this.
you're gonna take a brush like this, okay? Like ऐसा सा brush ले लीजिए. This is by Huda Beauty, or you can take a brush like this, ऐसा जो थोड़ा fluffy और थोड़ा मोटा हो आगे से, ऐसा flat और fluffy हो थोड़ा. And I'm just going to blend this. So next what we are doing is we have just taken a fluffy flat brush, and with the help of that brush we are just blending the kajal that we have used right now. Okay. So remember, do not use a smudge free kajal here, otherwise you'll not be able to smudge it. Use a normal, of course. use a normal kajal and use a flat fluffy brush to blend it in, and you are going to blend it in the upward direction. Okay. आप अपवर्ड डायरेक्शन में अपने काजल को ऊपर की तरफ ब्लेंड करेंगे. आप उसी जगह पे इसको रखो और इसको ब्लेंड करते रहो विद द ब्रश. ओके, you can close your eyes and you can just blend it more. So now, Saina, you know that where you're going to use that kajal of yours. You can use that smudge wala kajal here now. Exactly. A lot of people say हमारा काजल स्मज करते हैं, तो आपको पता है आपको कहाँ लगाना है अब. Okay, like this. And I'm just taking it up like this. You can see we are just blending it, right? मैं उसको lid में आप उसको डिफ्यूज कर रही हूँ अपने lid में with the same brush. Okay. And you can see we haven't used any extra product right now. And I'm not even used any eyeshadow. Okay. So this is how you do it. And इसके बाद I'm going to use our contour. This contour जो हमने लिया था, और हम एक और ब्रश लेंगे ऐसा फ्लफी सा, और इसी कॉन्टोर से आई एम क्रिएटिंग अ अपर क्रीज. ये जो मेरी अपर क्रीज है उस पर मैं ये ऐसे घुमा रही हूँ अपने ब्रश को, यहाँ से सी की तरफ ले जाएंगे, सी की तरह. एंड आई एम जस्ट यूजिंग दिस. ओके. एंड नाउ जो बीच का कलर है, जो हमें थोड़ा गैप दिख रहा है यहाँ पे, उस पे वी कैन यूज अ ब्लश ऑन हमारा, दैट इज अ पिंक कलर. यू कैन ऐड अ लिटिल पिंक कलर, इट लुक्स रियली नाइस. यूजिंग दिस ब्रश अगेन, एंड ये मैं पिंक कलर जो है थोड़ा सा आई एम गिविंग इट हियर. So next you saw what we did. So it looks really, this all is blended well into each other and gives you a very soft, smoky look. Okay. Put this pink here. Okay. I put a pink, I put a little brown, and then this is the black. Okay. Like this. So we've used hardly any products like you saw. And अब मैं अपने इस जो है ब्राउ लाइन पे मैं एक हाइलाइटर लगा रही हूँ. This is my own highlighter with a very thin brush. To complete the look, I'm putting a highlighter like this. Okay. So now you can see what we have basically done is we have just applied the kajal. We smudged it in our lid. After smudging that, we have used the bronzer, and we have applied the bronzer on our crease area, and then whatever space was left in between, we have just used that blush of ours, and we have just filled it in, and we have also filled it in a way that the bronzer and the kajal gets mixed very well, and it would look and it would give you a very blended look here. Yeah, and very subtle smoky, which you can actually take it anywhere you want to. You can see. Okay, it's not looking those raccoon eyes. अब नीचे पे भी अपने मैं lash area को भी cover करूँगी. So for that also I'm using my bronzer, this contour. I'm using the brush, thicker brush, to highlight my the lash line, the lower lash line. Okay, ये लगाया. You can put a little bit pink if you want to.
and I'm using the काजल लिया मैंने वापस से and भाई अपने काजल को मैंने बिल्कुल क्लोज टू द लैश लाइन लगाऊंगी, वेरी क्लोज टू द लैश लाइन, लाइक यू गाइस कैन सी. ओके, आंखों के अंदर नहीं लगाया वाटर लाइन में, मैंने इसको बाहर बाहर लगाया है. एंड इसको मैं वापस से आई एम गोइंग टू ब्लेंड इट. So that it gives me a smoky look on my lower lashes. It's a very easy thing and very looks really smart, guys. You guys can try it out. So look, it looks smoky. There is a little brown color showing, and then this black. और आपको अंदर I'm going to be using to make my eyes look bigger. I'm using this white kajal by Makeup Forever. आप किसी का भी ले सकते हो, लैक्मे का white भी बहुत अच्छा है. You can use that also if you want. So now you can see कि हम लोगों ने क्या किया. हम लोगों ने अभी white काजल use किया है. The reason why we have used white काजल is it will give you a effect of bigger eyes. आपको हल्का सा bigger eyes का effect देगा ये white काजल. थोड़ा सा आप काजल और डार्क कर सकते हो इस जगह पे if you want. It's totally up to you how dark you want it, how smoky you want to go. That is totally your call, guys. And Jaslyn, there was a question कि अगर हम पेंसिल काजल की जगह अगर हम जो जेल काजल होता है वो यूज कर सकते हैं क्या सेम इफेक्ट के लिए? कर सकते हैं. इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. यू कैन इजीली डू दैट. उससे भी बहुत अच्छा ब्लेंड हो जाता है, स्मज हो जाता है. So yes, guys, if you do not want to use the pencil kajal, you can also go with the gel color kajals that are available there, and you can use them for getting the same effect. Yeah, now I'm using this glue by Duo. Okay, मैं इसको बिल्कुल लाइनर की तरह लगाऊंगी अपने इधर. जैसे आप लाइनर लगाते हैं, you're gonna put it this way, close to your lash line, ताकि आपको लैशेस लगाना बहुत आसान हो जाए. It becomes a 2-minute job then. क्या होता है कि हम जब उसके बैंड पे लगाते हैं ग्लू और फिर लगाने की कोशिश करते हैं तो हमारे यहाँ ग्लू लग जाती है कई बार. ओके, it becomes very messy. So this is a very very easy technique. Put it very very close to your lash line like this. एंड तक लगाओगे ताकि आपके लैशेस अच्छे से कवर हो जाए, बिकॉज वी हैव लॉन्गर लैशेस. बट ऑल्सो मेक श्योर योर लैशेस इज अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ योर आई. आपको उसको मेजर कर लेना चाहिए. So next you can see we are going to what we are using right now is a lash और glue. मेजर करके उसको साइडों से कट करना है, फ्रंट से कट नहीं करना, एंड से कट करना है. अगर करना भी हो वो भी डिपेंड करता है कि आपको कितने लंबे रखने हैं लैशेस. So I'm using this Huda Beauty lashes, which is called Samantha. I'm using these. So they look like this. Okay, they're fluffy lashes. They look like this. Okay, very natural and get fluffy and fuller. And I am going to, अगर आपको काटने होंगे तो आप यहाँ से एक या दो स्ट्रैंड काट सकते हैं, 1 या 2 स्ट्रैंड अगर आपके लेंथ के हिसाब से लंबे हैं. For me they are fine. I like to create a longer look, my elongated look, my eyes. For me, they're kind of fine. So you can see what we have done is we have just applied for 2 seconds and then yeah, you can see. Yeah, so we have just applied the glue on our eyelids. The reason why the glue was by Duo. And the reason why we have used the glue here is because in order to if you use it on the lashes directly, no, you might end up getting a little messy effect. So in order to avoid that, we have applied it directly on our eyelashes, not like eyelashes, but on where you apply your liner. We have applied the glue there. We are going to leave it for around like 2 seconds, and then we are going to uh, apply our lashes over it. Now, if you feel like that the lashes are little big for your eyes,
So what you can do is you can cut those lashes, but never cut your lashes from the front. Always cut them from the back. And there was a question that how you're going to measure your lashes. So it's very simple. Just take your lashes, keep them on your eyes where you're going to place them. You If you guys, see, it's a very easy hack, like I put it, how easy it was. Yeah. so yeah, you're just going to put your lashes on your eyelashes. If you feel like that they're little big and coming out of your eyes, then yes, they surely are big. Cut them from the back and make them of your own size. And Yeah. this is how And you. now after you put the lashes, after you put the lash band on of the lash onto the glue, once the glue is little dry, like थोड़े से seconds आप रुक के आप lash लगाओगे. So what will happen is then you will press them. और थोड़ा उसको अंदर की तरफ press करोगे lashes को, so that वो अच्छे से उस पे stick हो जाए onto the glue. Okay. People who have hooded eyes, they will go for a little less volume lashes so that their eyes don't get covered completely with the lashes like this. Okay. So if you have अगर आपकी hooded eyes हैं तो आप थोड़े जो less volume वाले जो lashes होते हैं आप वो use कर सकते हैं. And also the glue was by Duo. Okay. Duo, जो yeah, glue DUO, yeah. And it's a black color glue, guys, and it is an international duo. It's not an Indian duo. So because international जो imported duo लेना आप लोग, so that it has a longer and a lasting effect than the Indian duo. Okay. And then after doing this, I have to put the mascara. I'm using this MAC ka mascara, which is really nice. Why I like it a lot? Because this is waterproof. Also at the same time, this is a Giga Black Lash Mascara by MAC. And इसका अच्छी बात ये है कि this has a very thin bristle, if you guys can see. So it works really well for my lower lashes. एक hair strand को ये cover करता है. So even the inner corners maybe it covers so well, if you guys can see. Like this. So you can see that we are using a mascara here, and you can see that the wand of the mascara is very thin, right? So that will help you to cover each and every lash of yours, even the lashes at the bottom. It will help them. It will help you to cover them too. Yeah, and also guys, don't put the mascara like this. ये lashes को खराब करने की जरूरत नहीं है. बाहर की तरफ से, अंदर की तरफ से आप बस मस्कारा कर दीजिए ताकि आपके खुद के lashes और जो मस्कारा का lash है, मतलब artificial lashes जो है वो blend हो जाए into each other. Okay. And that whiteness doesn't show. And नीचे आप अच्छे से लगाइए so that it gives a beautiful kohl effect, uplifted effect to your eyes. So you guys can see the difference. This is how you do your smoky eye look, which is a foolproof smoky eye look, which will not look something too much, too dramatic. This is something you can do it like every time wherever you're going out. It's very, very simple, very easy. So try to do this. And also now we're going to go with the lipper. I'm going to tell you which lipper to apply. How to apply the lipstick along with this look. So yeah, just avoid, I haven't completed this side, but first I will just do this quickly for you. If you have any questions, we can take up your questions, Saloni. Okay, we will take the questions. Okay, so there were a lot of questions regarding this that we have covered for the oily skin type, but a lot of questions were there for the dry skin type. That for which type of foundation can they go for? For the normal skin, na? No, for the dry skin. For the dry skin ke liye, there is no issue. You can actually go for any foundation which is cream based. Go for stick foundations. Stick foundations have a thicker coverage, and they are more thicker and they have full coverage. So that can help really well अगर आपकी बहुत dry है. और पता है अगर dry हो
या नॉन ड्राई स्किन हो या कॉम्बिनेशन ऑयली हो, द बेसिक स्टेप हाउ टू मेक इट वर्क इज बेसिकली योर प्रेपिंग. अगर आपने अपना फेस अच्छे से मॉइस्चराइज करा है बहुत अच्छे से, एंड you have done this spray well on your face, your face is not going to dry out, it's not going to flake out. तो उस पर बहुत डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपने फेस को प्रेप कर रहे हो. प्रेपिंग इज द बिगेस्ट, इज अ की थिंग टू प्ले हियर, इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू प्ले हियर. So keep your face very well hydrated. You will not have a problem of drying out. और आप फिर उस पे कोई भी फाउंडेशन यूज कर सकते हैं. Okay, there's a question that what is the difference between contouring? What is the difference between the contour, concealer, and the color corrector? So contour, I have taught you all separately, so I guess it was all cleared in the video. So correction is basically to hide your pigmentation, your dark circles, and all of that. Corrector is concealer is to bring out the features and all. It's to camouflage your blemishes and all those problem areas. And contour is something which is to uplift your face and to sculpt your face, to give a 3D look to your face. Okay. Okay, and now, so I was just repeating the steps for you so that you guys could just see it again in case you guys didn't see that time also properly. Just in your camera. Okay, yeah. It's fine. So something that how to correct the kajal if it gets spread while applying without affecting. Correct the kajal if it gets spread. So you have to use obviously the non-budging, the smudge-proof kajal, which is and आप उसको क्या कर सकते हैं, उसको आपको प्रोटेक्ट करना है, तो you can put a eyeshadow on top of it, वो उससे conceal हो जाएगा. Because if it is a cream based kajal, which is a smudge, which is not a smudge proof kajal, तो आपको ऐसा लुक देना तो ऑब्वियसली आप स्मज प्रूफ काजल ही करोगे. उसके ऊपर आप एक थोड़ा सा लेयर ऑफ आई शेडो लगा दो ब्लैक कलर की, तो वो कहीं मूव नहीं होगा. इट्स नॉट गोइंग टू स्मज इट, इट्स नॉट गोइंग टू ब्लीड, और इट्स नॉट गोइंग टू कम डाउन. Okay. Okay. For your question, I think you're not using the correct shade of your foundation. That is why your skin, after applying it, you are getting a dull effect. So try using the correct shade of your foundation. Okay. Okay, so there's a question that, ma'am, what is the difference between a bronzer and a contour? A bronzer and contour is the same thing. It's just the two different names, but it actually works the same thing, and it is actually the same thing. Okay. Yeah. We have already covered it, and for the pores, you can just use the pore minimizer and the toner, and it will help. It will help you with it. Exactly. Okay. I'll just repeat. I'll just come back in a minute. Saloni, I just need to bring my power bank. I know the battery might just die in any time. I don't know why I charge it fully, but I'm sure. I'll just bring my this thing, power bank. 2 seconds. Okay, sure. Ruchita, for your question, we have already covered it. So if you want to cover your blemishes and everything, you're going to color correct your face. आप blemishes वगैरह को cover करने के लिए अपने face को color correct करेंगे. Of course, yeah. Okay. If you have dark circles, you can go with orange or peach color corrector. It will help you with hiding it. Okay. If there's anything black or dark on your face, try going with orange or peach color corrector. It will help you with it. The BB cream that Jaslyn was using was by NARS, and it was in the shade number 0. Okay. Yeah, light. Yeah. I just quickly come with my charger, huh? Yeah.
Yes, Riddhi, if you have oily skin, you can go with gel moisturizers. They are absolutely the perfect thing to go with. Okay. Okay. Forum, if you do not want to go with the Hoola for the contour, you can go with either Sugar, you can go with Nika, you can go with Revolution. All these are budget friendly and they are extremely good. Okay. Okay. Look, guys, if there is all the products that Jasly, if you're not, if you want to go with any brand, if you want to know the brands, then you can go with either Sugar, that is absolutely great. You can go with Revolution, you can go with Mac, you can go with Pack, or you can go with what was there? This one for Forever 52. These are few brands that are very good that will come in your budget also. So yes, and also Maybelline, that is also good. You can go with that too. Yeah. Okay. अगर अनन्या, अगर आपका फेस फाउंडेशन लगाने के बाद पैची हो रहा है, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आप अपना मॉइस्चराइजेशन सही नहीं कर रही हैं. प्लीज अपना मॉइस्चराइजर चेंज करिए और सही मॉइस्चराइजर यूज करिए. आपको पैची और फ्लेकी नहीं होगा आपका. I'm just putting the glue again. Yeah. So for finding your undertone, you can just go. You can check your veins. If they are green, you are on the warmer side. If they are blue, you are on the cooler side. If you have both of them, you are neutral undertone. तो अगर आप अपनी वेन्स चेक करेंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन सा अंडरटोन है. ग्रीन वेन्स है अगर आपके हाथ में, तो इसका मतलब है कि आप Cool वार्म टोन. undertone. You're a cool undertone. So greens and browns are cool undertone, and oranges, reds, pinks are the warm undertone. Okay. I'm just putting. Yeah. If somebody is using lenses, can they use the kajal? Of course, why not? You should just be comfortable using it, because a lot of times what happens is people feel a little uncomfort, when they use a kajal after the, lenses. So कई बार वो end में लगाते हैं lenses. But अगर आप used to हो, so you can always put it, It looks very nice also rather with the lenses. It just enhances your eyes even more. Okay. Okay, so somebody is asking that, ma'am, if I have little blemishes on my face, what type of color? If I have freckles on my face, what type of can I go for? If you have freckles, then what kind of color correction can they use? Oh, it can be orange and peach or a brown. यही चलेंगे. Even if you have, blemishes and all, that will only work, for you. That cuts out all the freckles, all the blemishes. Orange or a peach or a brown cuts out all of it. And Ankita, freckles are absolutely beautiful. Do not hide them. Yeah, and freckles look so good these days. Yeah, I mean, we people, हमें बनाने पड़ते हैं artificial freckles. So you're lucky that you have it naturally, Any moisturizer that is gel based will go well with the oily skin. And if you want to get a moisturizer that is for all skin type, you can go with Embryolys's that Jasleen just used. Yeah. Oily skin wale gel based moisturizers used. You guys can see now the smoky eyes that I finished. Okay, this is how you will do it. And it looks very smart and looks very very up, modern, and at the same time it's very simple, like not a big thing that I did, and no eyeshadow palette I used, not even one. So if you don't have eyeshadow palette, don't get worried, how will I create a smoky look? It can still be created. इसको आप और डार्क कर सकते हो, इसको और ब्लैक कर सकते हो, दैट इज टोटली अप टू यू. और काजल लगा के इसको और डार्क कर सकते हो, दैट इज टोटली अप टू यू. सो दिस वाज अ नो मेकअप so look, so I kept it less of kajal and I wanted to give it a more natural look. Okay, after doing this, you can also avoid mascara lashes if you want. You can just do the mascara if you want to.
Okay, so that these alterations you can always do. Since I wanted to teach you how to put on lashes, so that's why I had put this. I had to show you guys. Okay, after doing this, I'm using this Forever 52 key pencil, lip pencil, and I am creating a cross here. So now you can So see that you know, जिनका क्यूपिड्स वो बहुत छोटा होता है, उनको क्रॉस बनाना चाहिए ताकि उनका क्यूपिड्स वो अच्छे से दिखे. To enhance the shape of your lips, you know, we have to make a cross. So अभी you can see हम अपने लिप्स पे काम कर रहे हैं. तो लिप्स के लिए हमें क्या करना है कि अगर आपके क्यूपिड्स, इफ यू हैव वेरी स्मॉल क्यूपिड्स, सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन ऑलवेज ड्रॉ एन एक्स on the cupid area. It will help. On the upper lip you draw a cross, and on the lower, so that you can create a shape, and you can do like this, invert करके lips को आप अपनी लाइन ड्रॉ कर लो. सो इट बिकम्स इजियर कि कहाँ लाइन ड्रॉ करनी है, और थोड़ा हल्की सी बाहर निकाल के करो, सो दैट योर लिप्स लुक बिगर. दोज हू हैव स्मॉलर लिप्स, उनके लिप्स थोड़े बड़े लगे. Jacqueline, the lipstick that you're using is by This is by Forever 52. Yeah. So yes, guys, the lipstick that Jasleen is using is by Forever 52. Jasleen Forever 52. It's a lip pencil. Okay, and this is in the shade, I don't remember the shade, but they have very good range, so you guys can check it out. I know इसी से fill कर रही हूँ lips को. Okay, insane tech. If your lips are very dry, no, please try to moisturize them on regular. You can use this. You can use a lip balm, and you can use a lip scrub to to take out the dryness, and your lips will be good to go for a nice lipstick. आप लिपस्टिक यूज करने से पहले स्क्रब कर लो लिप्स को. स्क्रब करने के बाद आप ये लगा लो लिप बाम. योर लिप्स विल नेवर लुक ड्राई. ओके. Okay. And there's a question that how can somebody hide their scars? Scars also by corrector. You'll have to hide them by the corrector only. Corrector से सारे scars, blemishes, acne points सब cover हो जाते हैं guys. Okay, so yes, guys, if you have scar, you can always cover it up using the color corrector. Color corrector के help से आप उस scars को भी hide कर सकते हैं. Okay, so yeah, after doing this lip pencil, I've filled in with the same pencil, and अब मैं इसको थोड़ा tone down करूँगी. So I'm going to use I'm using Huda Beauty की this lipstick called Jet Setter. This is by Huda Beauty, called Jet Setter. It's a liquid lipstick. Aishwarya, you can make your face look little slimmer by doing the contouring quickly. The way we have taught you the contouring, you can just do the contouring the same way, and you will be able to make your face look little slimmer. Dipti mein it was Duo. The lash glue name was Duo. उसका नाम Duo. Yeah. You can go with sugar for the lash glue. Sorry. For the loose powder, you can go with sugar. You can go with pack. You can go with MAC. You can go with the Huda Beauty also. Huda Beauty also has a very good powder called banana bread. You can take that color or a custard color. Okay, after I have done the liquid lipstick, और मैं इसको थोड़ी सी shading create करूँगी. So now you see how my lips automatically started looking pouty and big, you know. And अब इसको मैं I'm using this Kylie की lipstick called One Wish, and I'm using this. So you can see that just lining and filling in, we have created a very pouty and bigger lips here. So you can use the same process to get it done. आप same process करेंगे तो आपको भी ऐसे अच्छे से pouty and bigger lips मिल सकते हैं. Now you see I have used this center में light color इसलिए लगाया मैंने
ताकि हमारे लिप्स जो है और पाउटी लगे, बिकॉज दिस इज अ टेक्निक, यू नो, जहाँ पे लाइट पड़ती है वहाँ पे वो एरिया बड़ा लगता है. So always put a lighter color on the center of the lips so that your lips look poutier and bigger and fuller, and sides can be a bit darker. Okay, like this. Priya, if you already have a very slim face, I don't feel there's any need of doing the contour. But if you feel Yeah, like you can avoid, or you can do very less. You know, you don't have to do too much then. You know, and then after this, the last step that I want to tell you guys is just to take a spray to pack this makeup so that this makeup doesn't move anywhere for good 16-18 hours. This doesn't move. So this is the best spray in the market that I love, which is called Urban Decay Ka All Nighter Spray, and the makeup stays for good 16-18 hours, you know, with this spray. It is that good. So I'm just going to use this spray. Urban Decays All nighter. Okay. Yeah. This spray you can use it. This is by Urban Decay All Nighter. So now this completes our look. So this is like a no makeup look. You can always remove the lashes if you want to. If you don't want to remove the lashes, then also this is the thing. इसमें मैंने कोई आई शेडोज यूज नहीं करे, ज्यादा प्रोडक्ट्स नहीं यूज करे, बेस भी बहुत लिमिटेड और लेस केकी रखा है, you know, and little bit contouring and little bit blush of course, and you know, eyebrows look very subtle compared to the eyes. This should not be darker than your eyes, otherwise all focus will go on your brows and not the eyes. So this is how you guys gonna do it. I hope you liked the session, and I hope you understood the technique, how to do it, and I hope you will copy this. I mean, you guys will practice it and send me your selfies or your videos. We'd be really happy if you can make it and create this look and send us pictures. Yeah. And guys, I hope that you all have liked and loved the session. And if you all have liked and loved it, please go and join us in all other different classes that we are upcoming with. So for that, you can just check the description box. You will find the link to download the Pankhuri app. You will also find the link where you will be able to see all the upcoming courses. And if in case you have any questions or queries regarding the upcoming courses, you can always ask them on our customer support chat, and we'll be more than happy to help you there. तो अगर आप कोई भी चीजें, अगर आपको यहाँ पे जो भी हम लोगों ने सिखाया वो सब अच्छा लगा है, तो प्लीज हमें और भी हमारे अपकमिंग कोर्सेज के लिए ज्वाइन करिए. आपको पंखुरी लिस्ट, आपको पंखुरी ऐप की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं. सारे अपकमिंग कोर्सेज की जो लिस्ट है वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी. एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन और क्वेरी हो तो आप उसके लिए भी हमारा जो कस्टमर सपोर्ट चैट नंबर है उस पर पूछ सकते हैं. सारे क्वेश्चन के आंसर्स वहाँ पे हो जाएंगे. एंड वी आर गोइंग टू कम अप विद मोर ऑफ दीज सेशन. So if you do not want to miss any of these, please do like the session, subscribe to our YouTube channel, and comment down how much you have loved it. Okay? तो हम ऐसे और भी बहुत सारे सेशंस के साथ आएंगे. तो अगर आप कोई मिस नहीं चाहते हैं, सेशन को लाइक करिए, हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एंड हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा सेशन. ओके? एंड ऑल्सो please go on Google Play Store and rate us there, because that is really important for us at this point of time. तो अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के हमें रेट भी करिए. वो हमारे लिए बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है. एंड यस, आई होप दैट यू ऑल हैव लाइक्ड एंड लव्ड इट. एंड द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस सेशन विल बी हियर ऑन द यूट्यूब फॉर एवर, सो यू कैन वॉच इट व्हेन एवर यू वांट टू. जो पूरा रिकॉर्डिंग आपको यहाँ इस ऐप यूट्यूब पे रहेगी, तो आप जब चाहें एंड जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं. And for the certificate, you can just go to the Pankhuri app and you will find it there. Okay? So yeah. Okay, guys. So we'll sign off now. So if you have still any questions, you can ask me in the app. I'll be very happy to answer them. And almost we have covered all the questions. But still, in case there is any doubt or anything in the mind which is still there and is not clear, and once you create it and उसके बाद भी आपको कभी कोई doubt आता है, so you can always put down the question. We'll be happy to answer them.
And I hope you enjoyed it, and see you guys soon for the more upcoming sessions. Okay. Happy weekend. Bye, guys. Bye, Saloni. Bye, Jasleen. Bye, everyone. And if any of the questions are left, please do let us know on the on our app, and we'll be more than happy to solve them all. कोई भी अगर आपके क्वेश्चन क्वेरीज बच गए हों तो प्लीज हमें ऐप पे बताइएगा, हम वहाँ पे उनको सॉल्व कर देंगे. ओके, so bye, see you all in some other courses. Bye bye everyone. Bye.